So what we did yesterday, we started IO package and did with some start basic stuffs. Um, Not throw this IO package. So then we saw how to, what's the purpose of having IO package? So by using that package, we can read and write some contents in a file or read from the same folder or file. So we have two types of streams, byte-oriented stream and character-oriented stream. And memory-wise, bytes occupies 8-bit, character occupies 16-bit. It's about one character or one byte. And then we also came to know there are two terms, source and sink. So source is something which from where things get started. Like we have a file, we want to read something from the file, so that could be our starting point. And after reading that file, there must be some purpose why you are reading that. So maybe you want to read that and some content and process it or save it in database or just want to print something on the console. So whatever is that, that goes in a sink. That is the endpoint or the destination of your data. Then we saw as we have two categories of streams. So one was byte oriented and next one is character oriented. So byte works with the you can say finely granular details, the very basic or you can say base of any data type, bytes. So these class deals in byte data. If you see any class with output, that is for writing. If you see any class with input, that is for reading purpose. And of course, object is parent class for these sub parent classes. And by the way, output stream and input stream both are abstract classes. And you can see these classes has this child in it. And then character we'll discuss about it later. And then we saw escape character slash is treated as an escape character in Java. That means compiler will skip this character. That's why if we're using single slash like this way, so when that code gets compiled, so all slashes will be gone. So that's why we put double slashes. So one will be skipped, next will be considered, and that will become a path of that file or folder. And this was a method read, which is used to read some contents, and that's where we use it. So give a path, use this file input stream class, pass the path of the file, and call this read method. And then it will give you a int value of that character. That is an ASCII code. So we need to convert that into some character type. So we need to what casting typecast. So that integer get casted to a character type, and then we got this A. And this is the file from where we were reading it. Something similar we did with writing. We got the path, we used file output stream class, and there's a method write. Just pass something in that write, and that will print whatever content you're using inside that file. And good thing about this output stream class is it creates that file on the fly. You don't have to actually create that file. If you give the path and that file is not present, so the class will create that file in the directory if that file directory is correct. And yeah, that's it. Then we also saw file class. By using that class, you can do very basic operation, and of course, lots of operation can be performed. Like if you want to get a path or just a file name from the directory, you can get it by using file class. Today we will see the file writer and reader classes. And okay, even before that, let me show you how to read something which has, if your file has multiple records, like a data or something. So that can be also, because that's the actual way. Or what if you want to read the whole file, not just one character? Because that's what we saw in previous class. It was just printing one character. But what I want the whole file content. So this was the file, dummy file A. Now let's say hello, welcome, good day, bye bye. Fine. So we have 4 lines and lots of characters, at least not one. Idea is I want to read this whole content and print on Eclipse console by using file input stream, because that's the class which will use to read the file. So let's do that first, then we'll jump over to character and file reader stuff. So IO demo. So input stream tester, I'll just copy that file. Read whole file tester. Okay, I'm changing the name. And I don't think I need this whole comment again, so removing it. We already have this thing. And if you guys are okay, I will continue with this file. Otherwise, I will keep it. I'll do this from the scratch. Tell me, should I keep it this way or just remove and do the from the zero? If any problem with the approach.
No problem, sir. No problem. Okay, fine. So as we know, line 10 is the path of that file, that is dummy file. Let's verify. Yep, dummy file.txt. So it has multiple characters now. Okay, then passing that file inside file input stream character, that's a constructor, and then read. After this, we need to do some kind of logical stuff. So let's remove this stuff. Okay. So what we have, we just have a file and passing the file path. Now, if we just keep read method, that will only give returns you one value. We need to up, and we are very sure about this file content. It has multiple data in it. So what we can do, we'll say input stream, or what we can do one thing. Let's run a while loop. Okay. I will run that while loop like an infinite time. That's one approach, and that's not the only approach. It's totally up to you how you want to proceed. Uh, this is what I like. I'll run this loop infinitely, and inside this loop I will say this input stream dot read. Okay, this gives me an int value, right? So data in int type, right? That's what it gives me, int. Now I will check if I'm making this example really simple, otherwise I can use some shortcut and put everything on while condition, but I just want to keep it simple. If data in type, I want to break this condition because read method, what it says, let's go back and see. That's what we saw, reads a byte of data from this input stream. Okay, fine. What it returns? It returns the next byte of data, or okay, in positive case when we have a data, so it returns the next byte of data. We are talking about this int at return. I'm telling you how to read the documents. This will really help you in upcoming classes, and plus in your professional you can say job or journey. So returns next byte of data or -1 if the end of the file is reached. So either it will give you next byte of data or it will give you -1. Vipin, do you know why you have used that -1, or you just used it because you saw somewhere? Vipin, I saw you were using -1 as in your condition. सर When you, आई थिंक हाँ, सर मैंने सोचा कि अगर -1 पास करने के बाद डेटा प्रोवाइड फास्ट एंड देन डेटा ब्रेक तो दिस -1 टाइम। का कैसे पता चला आपको? तो ये तो मैंने देखा था किसी वेबसाइट पे शायद। हाँ ठीक है, आप कंफर्म हो गए -1 एग्जैक्टली है क्या? यस सर। -1 डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, उन्होंने डॉक्यूमेंट पढ़ा है और फिर अपने वो बना ली, वेबसाइट बना ली उन्होंने, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है कि इधर इट विल रिटर्न यू नेक्स्ट डेटा और -1, और -1 कब आएगा? इफ द एंड ऑफ द फाइल इज रीच्ड। तो मैं क्या करूंगा, आई विल यूज दिस कंडीशन एज माई ब्रेकिंग पॉइंट। आई विल से इफ डेटा इन इंट टाइप इक्वल्स टू -1, that means it is at the end, so I will break the loop. One more Java keyword, that's why I'm using this while infinite loop, because I want to break this loop. So one more is Java reserve keyword or identifier. So if जो डेटा रिटर्न हो रहा है रीड से वो -1 है, तो लूप को ब्रेक कर दे। अगर नहीं होता, हाँ जी, तो प्रिंट कर दे, करेक्ट। तो ये डेटा इसके अंदर होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर इट विल रिटर्न इंट वैल्यू, राइट। सो मैं इसको कास्ट भी करूंगा कैर टाइप में। हो गया, बस इतना करना था। अब ये आराम से सारा डेटा रीड करेगा और आपको डेटा दे देगा। एक काम करता है, क्योंकि देखिए वाइल लूप में ये वेरिएबल बार बार इनिशियलाइज होगा, तो बेस्ट अप्रोच क्या है, इसको बाहर रखो, चाहे 0 कर दो या फिर ऐसे छोड़ दो, सेटल कर दो। कभी भी लूप के अंदर जब तक रिक्वायरमेंट ना हो वेरिएबल डिक्लेयर मत करना। नेवर डिक्लेयर योर वेरिएबल इनसाइड एनी लूप, always make sure that your variable is outside. One time initialize, one time declaration, and then you can reuse it multiple times. But what was happening earlier, it was always creating a new int type of this way. But now it is fine. So declaring this, initializing it, and then using it. Okay, let's run this code and see whether it's reading all or not. So right click, run as application, and yep, it is doing something like hello, then space, welcome, then space, then good day, bye bye, and it's excellent sign. Everything in one line. Why? Any idea why this weird message came up? सर प्रिंट एलन। Print ln. Line 19 says print ln.
for next line. So I will use just print method. Okay, now this will print everything in one line. Not everything, wherever the line is breaking, it will keep that break it of that line. And here we go. So now we are able to read that whole file. So we just added, I have not added anything from my end. It was always from the document side. Document clearly says use -1 as your condition and you're good to go. So I did the same. Sir, Yes, Shivendra? sir, kindly explain so this -1 bar. Huh, sure, sure. Just give me a minute. Let me put this here and the file as well. Screenshot not working. Okay, so to understand that -1, we have to understand the document. So at least initially we know read method returns one byte at a time. So we are running a loop. It goes inside this and says input stream read one byte and it will return something, maybe next byte. So initially when the loop is starting, it goes in this file and reads h. Okay, so that h goes back to the code, stores here, and it checks whether, of course not h, it gives its ASCII code. So I'm not sure it's small as to 97 plus 56. So maybe some 102 or 4 or 5 something it returns. So definitely it's not equals to 1. So why -1? Because in read method it says what it returns int type. And what exactly in that int is the next byte of data. So when we say byte, it looks like for us person or a human being, we can read byte as a numeric value. Or if you want to use as a character, so you have to wrap that within single quotes. So it says int value. That means some numeric value you will get. So that numeric will be treated as a byte. So read method returns either byte or -1 if the end of the file is reached. So as soon as you are at the end, let's suppose our code reads this exclamatory sign, and definitely it has some code. If you want to see, let's cross check what's the code of it. So I will remove this casting. Let's run this code again, and let me do this one as well. Println. That's it. So this is some kind of code. It not this one. 13, 33. 33 is the code. 13 and this 10 is getting some kind of string value. So because we have a next line and plus this empty line. So it returns 13 and 10. For 33, 33 three times. 33 is a code for exclamatory sign. After that, the documentation says if the end of the file is reached, so automatically this read method returns a negative value. So it goes here. As soon as it reaches the end, it returns -1, -1, cross check, yes, so it will break that infinite loop of file. So -1 is actually just a part of a documentation. That's how read method is wrote. Someone who wrote this whole document. It says कि एक method है, वो method या तो आपको next byte देगा जब तक उसके अंदर डेटा है, अगर byte खत्म हो गया that means हम फाइल के आखिरी में है तो वो -1 देगा method. तो हमने उसको एज ए कंडीशन अपने अपने बिजनेस लॉजिक में यूज कर लिया. शिवेंद्र, क्लियर? Yes, sir, आगे सर. ठीक Clear. है, हाँ, ठीक है. सो दैट्स हाउ वी रीड whole content of a file. So let's go back. Okay, fine. So this is done. Okay, next what? Let's see these file writer and reader classes. So let's start with file reader. And good thing is about this class is it reads in characters, not in bytes. So that means we can use those double quotes. So nothing much about the documentation. It's just a class. So let's quickly close all these files. Going to create a new Java class. I'll say file reader tester. Fine. So we are going to use this file reader class to test whether
we are able to read some content as a character node. Fine, we are tester file. So let's have a main method. Now, again, things will remain same. That means we need to give a path of that file. So I can open a new file. I'll take this one. Okay, this is must, of course. How do we know where's the file? So definitely we need to give the path. That's done. Next is we need to instantiate that file reader class. So let's try file reader, and there it is, second one, file reader from java.io. As soon as I control space, it gives us option, right? So it gives me suggestion, either the tester where we are already, either you want to create the current class object or this one more class, and this is java.io package. If I click, it imports from this package. Okay, done. Then file reader equals new file reader, and it has three constructors, so I'll pick the third one, which takes string, because I have a file path as a string type. Done. And yep, as soon as you use this constructor, it throws one error or exception, file not found or something. Let's control click and open it. There it is, throws file not found exception. Since this method is written by someone else, so they don't want to handle this file not found issue. This is okay, if your file is missing, we will just throw the exception. So it's our responsibility to handle the scenario. The best way and the only way is try catch. Throws keyword never handle exception. It simply skips that or don't handle it. It will just throw to exception to the caller. Throws is not used to handle exception. It's to duck the exception, rethrow it. The only way for handling exception is try catch block. Okay, so we have try catch block. Catch says file not found exceptions. Okay. Next, we need to check the method, what it returns. So if I try to run this code, let's say we have a file reader dot read. Okay, and again we have a read method. Let's see, is it same or different? Returns the character. Shivendra, please notice here, it says reads a single character. This time it is returning single character. Earlier it was returns a single byte. And what it returns, again int value, and it says the character read, either it will return character that it has been readed or negative one. Yes, we have the same condition here. If you want to read whole thing, so you can go for this negative one condition. You can use this as a negative condition, it will work. So let's use this one first of all, and definitely it will give you the same output like it was giving earlier in file input stream. Int data, and done. This out, and of course, sorry, see, it also returns throw exception, so let's handle this as well. Not this way, I want to go for array. I'll explain you what that happened earlier, but for now we have two catch blocks. First catch block for this constructor, second catch block for read method, and once this read method execute, it returns the data, and I can simply returns data. Okay, and if you run this code, let's run the code and see what it returns. Run as application. It is again giving data. Correct? How? Because it returns integer value, right? Yes, sir. So it doesn't matter what we have in that txt file. It reads h because documentation says it will read the one character and gives you a character in an int form and returns 104. That's the code for h. So we know how to do this thing. Just simply put char as a casting, and if I run this code one more time, we are getting small h. So everything is same except we just change the class. So as I told you, there are lots of other classes as well. So there are multiple ways to read a file, and I'm teaching you the very simplest and easiest one. If you open documentation of other sites or site, maybe you might confuse what just happened. So to keep things simple and small, focus on concepts. So we are learning how to read files by using file input stream or file reader class. The very first example was just to show you how to read a single character or single byte. So we are successful in that. It reads one character at a time. Okay.
And how was our file look like? This is our file. Okay, so this was our file. Please mute yourself unless you have to ask something. So read method does this operation, and sys out is coming and printing here, and this is what it reads, the small h. Okay, done. So now we have idea how to use file reader to read something from the from that location. So here comes the operation. Again, I'm giving you one homework. Read all contents. Fine, that's the homework. Read contents from the file using FileReader class. Let's see what solution you will come up. Okay, so it's totally up to you. Either you want to go with the while loop, or maybe you might find some other class which will give you the whole scenario. So that's totally up to you guys. But try this out. Read the all contents from the file using FileReader class. So, but definitely we will do this tomorrow. But I want some example from you guys. Okay, this is done. So this is FileReader. As I said, these are some classes and we are learning its concept. There's no theory about it. Like I will start explaining what is FileReader, how many constructors are there, and how it works. We already know what is constructor, so I don't want to explain that again in every single topic. Next is file writer. So I want to write into a file this time by using FileWriter. So it again deals in character. I mean, it's a part of character-oriented stream. So it will write something in characters. Now that will be interesting to see how it is happening, right? So let's see this. Going to this file, file editor, file editor tester. Okay, so we have a very basic approach, main method, and we have a path. This time I'll give something else. Let's say temp file dot. Okay, new file. It's not here in our directory. If I go back to batch one, so we have dummy file, sample, but don't have temp file. So if everything was fine, it will create a file and write whatever you are going to pass from here. So idea is same. We need to first of all instantiate that class, that file writer. So file writer here, then file writer, the object, then new, and again it has wow 1, 2, 3, 4, 5 constructors. So again I'll go with this string and file path. Done. And of course writer will throw error exception, the same exception, IOException. So let's handle it. Oh, sorry, not throws. Let's use try catch. Surround with try catch. Done. So in catch block, we can see the argument is of IOException type. Guys, if you actually practice code, it has lots of questions from interview point of view. Right now, I'm using IOException. What if I use just exception? What will happen? What if I use something else? Its child or its parent class. That's one scenario. So practice that as well. I'll suggest as a homework. Do some interview questions on it. On it means IO package. Because tomorrow we will pick one more topic from IO package and IO will be done. So maybe we'll start some new concept, maybe JDBC API. So I hope both of you have this workbench, Eclipse, or sorry, MySQL workbench. If it's not there, please download it. I've already told you, 8 version. Okay, so it's done. So we have an instance which throws IO exception handled
Now next must be the method. So FileWriter, the reference and write method. So again it has character. Vipin, you have used byte array, right? Something similar we have int. So let's try with int type. Let me print 5. And write won't throw any exception, so it's fine. No need to handle anything for write method. Access out. Content is done. Anything. Okay, let's run the code and see what happens. Application and content is done. And if you check this, we have a file, temp file. Refresh. And if I open this file, it's empty. Okay. Any guess why it's empty? You can see the file size is 0 KB, 939, 939. So everything's fine, no exception, no error, and our message was also printed. Why my file is empty? It's blank. Because let me tell you guys what happens when you write something. It goes through a pipeline. For us, you can treat as a pipeline. Let me demonstrate to you what I mean here, pipeline. So what I'm doing here, I have a class FileWriter. What it is doing, it is passing something. What is that? It's 5. Okay. FileWriter says take this 5 and write into a file. Write this into file. Right, that's the idea. So what JVM will do, it will open a connection. JVM will open a connection to file directory, right? That's what JVM will do. It opens a connection so that the content you're passing will be written there. So you can say that's kind of a pipeline. I can draw this like this way. Okay, that's the pipeline. So 5 is here, it is pushed in this pipeline, and now this 5 is stuck here. Okay, it is not reached to the sink. It was started from source. Source was our Java code, the code we are writing, and sink is this time the file, but it was stuck here. So we have a method in case if this any kind of data is present in pipeline and you want to push it to the sink. Here we want to send it to sink, that is um, text file.txt. That's our file. We want to write this file into here. So the class FileWriter provides a method flush. Okay, it works the same like the flush works. It takes whatever in the pipeline and send it to the sink level. So something similar we'll do here. After writing this, I'll say FileWriter dot flush. Okay, now let's run the code. Run application again. Content is done again. Let's see the file, and you can see it says the file has been modified. Let's, if I say yes, because I have passed some numeric value and that's a byte data of it, but something is there this time, and you can see the size increased now. It's 1 KB file. If I just if I written this earlier, just flush, so you might won't see the impact of it. So I hope by this diagram you understood the flush operation. Flush simply takes whatever data you're trying to read or write and push that to the sink side. This is our source. This is our sink. Okay, let's put something which we can read. So going back, okay, yep, write method also supports string for FileWriter because it supports characters. So we can pass string. Let's run this again. Content is done, and if I open notepad, it is again modified. If I say yes, you can see that 5 is there and then ABC. That ABC can we say hello. Done. Run as application.
content is done, and if I again open this, it is modified, open hello. That's how you can write some content into a file by using FileWriter class. And make sure you guys are using flush method. Without it, it's hard to push content sometimes on sync side. It might be missing somewhere in the pipeline. So flush is critical. Always use it. Sir, Yes, Pipin. sir, again repeat why we are use plus keyword. हाँ ठीक है. Okay, so what was happening if I remove this flush method here? So FileWriter will read the content inside the write method and tries to push. So of course you cannot visualize it how it actually happening. So for understanding it, I created a pipeline. Pipeline is something which has a source and this is a sink, starting point and end point. So FileWriter did what? It pushed that data. This is our data. I'll put a note here as well. Okay. FileWriter pushed the data into the stream pipeline. Okay, I'm using one term, stream pipeline. Sometime, or I'll say most of the time. Most of the time that data get stuck into the same pipeline, and as a result, that data will never goes to sync site. That means no data is printed there. So how to do this? To fix this issue, we can use flush method. Okay, so this will do the stuff. So this is what we did. We use the flush method to clear that pipeline. So whatever we are pushing from source side by using FileWriter, it goes till the sync side. And who opens this connection? JVM will open that connection to the file directory. File directory is this text file dot text txt. विपिन कुछ क्लियर हुआ? रिपीट करूं? कोई इशू नहीं, रिपीट बोल दो, नहीं आया समझ में तो. अभी समझ के चलो कि एक पूरी पाइपलाइन चलती है जिसमें एक सोर्स है, एक सिंक है और बीच में आपका डेटा है. इसको इस पाइपलाइन को क्लियर करना है. डेटा यहाँ पे स्टक हो ही जाता है क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ आपका कोड इस ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चल रहा. बहुत सारे ओपन है कनेक्शन. इफ़ यू सी द टास्क पर मल्टीपल सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर आर ओपन हियर. सबके कनेक्शंस ओपन है. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है जो कि विंडोज़ है, कुछ जेवीएम हैंडल कर रहा है खुद के लिए क्योंकि हम एक कोड चला रहे हैं जावा का. तो सब में एक सोर्स सिंक होता ही होता है. पर जहाँ पे फाइल डाटा बात हो रही है तो वहाँ पे एक पाइपलाइन बनती है जहाँ पे डेटा आपका विजुअलाइज कर लो. एक पाइपलाइन है जिसमें आपका डेटा ट्रांसफर है. जैसे एक पाइपलाइन होती है, कुछ पाइपलाइंस के थ्रू गैस पास होता है, एलपीजी गैस जो घर में यूज हो सकती है. कुछ में जो वाटर सप्लाई यूज होता है. तो यहाँ पे क्या पाइपलाइन के थ्रू हम बहुत सारा डेटा ट्रांसफर करते हैं. ऐसी एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है जावा में. तो उस पाइपलाइन में डेटा स्टक हो गया, आपको क्लियर करना है क्योंकि वो सिंक तक जा नहीं रहा. आपके कोड ने क्या दिया, मैंने भेज दिया पर गया नहीं, तो उसको फोर्सफुली उस पाइप से निकालकर सिंक तक पहुंचाने का काम फ्लश करता है. तो जो भी आप सोर्स से सेंड कर रहे हो, सोर्स हमारा FileWriter क्लास है जिसने डेटा लिया राइट मेथड के थ्रू, इसको पुश कर दिया तो पाइपलाइन में गया पर वो स्टक हो गया, जो मोस्टली हो जाता है. तो उसको क्लियर करने के लिए कि पाइपलाइन में डेटा ना बचे, जब भी सेंड करें वो सीधा सिंक तक जाए, तो सिंक पर पहुंचाने के लिए फ्लश का काम होता है. सर ओके. जब हम फाइल आउटपुट सिस्टम यूज करते हैं हाँ तो उसमें तो फ्लश का यूज नहीं होता है. हाँ, क्योंकि वो बाइट्स में काम कर रहा है. यहाँ पे कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, यस, यहाँ पे तो है ना. कैरेक्टर यूज हो रहा है. कैरेक्टर्स हैं. बाइट इज टेक स्मॉल यूनिट. सो समटाइम्स क्या होता है, जो कहते हैं ना मेमोरी एफिशिएंसी, तो ये वहीं पे ट्राई करता है कि मे बी कुछ और भी डेटा आ रहा होगा
क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सम 16 बिट मेमोरी। 16 बिट में बहुत सारा डेटा होता है। अभी तो हम सिर्फ आपको यस समझाने सर। के लिए मैं पे एक एक कैरेक्टर पास कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली थोड़ी कोई 1 2 3 पास करेगा, वो डेटा होते हैं बड़े बड़े, 10 20 MB की फाइल होती है मिनिमम, और जाती हैं फिर आगे तक। हैवी हैवी डेटा होते हैं जिसमें बहुत सारा कंटेंट होता है। तो उस टाइम तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो वो क्या करता है कि वो वेट करता है जेवीएम कि ठीक है और भी डेटा आ रहा होगा, और फिर उसको एक साथ आप फ्लश कर दो। और मोस्टली हम फ्लश करते हैं हमेशा इसमें, ये फाइनल ब्लॉक में, है ना, यहाँ नहीं करते। और क्योंकि कैरेक्टर टाइप है तो कैरेक्टर साइज बड़ा होता है, तो बेटर टू यूज दैट। सो दैट्स हाउ वी यूज फ्लश मेथड। और ये इसका एग्जांपल। सर बोलिए। सर बेसिकली मतलब जो फाइल राइटर है वो एक तरीके से पाइपलाइन या फिर हम कह सकते हैं कि बफर यूज करता है, हाँ मैंने काइंड ऑफ। राइट राइट, बफर अभी हमने यूज ही नहीं किया इसके अंदर। बफर का तरीका भी यूज के अंदर है कि बफर क्लास को यूज कर लो, वो कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं। पर हाँ, बफर भी क्लास, बफर मेमोरी होती है एक। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। ये बफर है, आप इसको यूज कर सकते हो कि बफर मेमोरी होती है जिसमें डेटा जाता है। दैट्स मोर रियल टू, यू कैन से रियलिटी, क्लोज टू रियलिटी। कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग पाइपलाइन यू कैन से बफर मेमोरी, वो बफर मेमोरी में जाता है और वहां से डेटा पुश होता है। विजुअलाइज करने के लिए मैंने पाइपलाइन बोल दिया कि आप विजुअलाइज कर पाओगे कि ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन है। पर वो एक्चुअली बफर मेमोरी होती है। थैंक्स तो सर ये श्वेता। तो हाँ मोहन तो बोलिए। सर अगर हम देखें तो सर ये हर मतलब ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा ना, अगर मान लीजिए हमारे पास डाटा ज़्यादा है तो हाँ बफर अगर भर गई है तो डाटा लॉस होने का भी ज़्यादा खतरा है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल डेफिनेटली, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज दिस फाइल मच। मुझे तो ये आपको दो टाइप की स्ट्रीम दिखानी थी, इसलिए मैंने फाइल रीडर क्लास यूज करी है। मोस्ट ऑफ टाइम वी ऑलवेज यूज फाइल इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि वहाँ बफर मेमोरी बनती नहीं है। ठीक है मनन, यस। हम फाइल रीडर से यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक टाइप है। थोड़ा सा एग्जांपल हम क्लियर पाएंगे। अदरवाइज द बेस्ट एंड द ओनली बेस्ट अप्रोच इज फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास। ये क्लास आप बहुत बार यूज करोगे, मैंने कल भी बताया कि क्लास बहुत यूज होती है। तो आप फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज करो, वहाँ पे बफर का झंझट ही नहीं है, डेटा आएगा बाइट्स में, और खत्म काम। छोटा छोटा काम, उस बफर मेमोरी बनती नहीं, तो डेटा लूज होगा ही नहीं कभी। एरे बना लो, खत्म। ओके सर। ओके, सो ये था फाइल रीडर और रीडर का और राइटर का काम। होमवर्क मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ दो चीज़, कि इसमें आप लोग ये कवर करिए। पहले तो फाइल रीडर के थ्रू डेटा रीड करिए, बहुत सारा कुछ। अभी फिलहाल हमने सिर्फ एक कैरेक्टर रीड किया है इस फाइल में से, जो कि एच था। ट्राई करिए कि एग्जाम्पल के लिए कि कैसे होगा, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन खुद से देखिए, और जो समझ में आया मेरे से पूछिए। ये अभी आपका काम है, ये वी आर डन विद द कॉलेजेस राइट। अब आपको मैं टास्क दूंगा, पढ़िए मुझसे पूछिए, नहीं पूछोगे तो आपका लॉस है। पूछोगे नहीं तो मैं उस पर डिस्कस कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप क्या पढ़ के आए हो। तो पढ़ के आइए, पूछिए, तभी काम चलेगा। और नेक्स्ट टॉपिक इसमें एक हाथ आता है, सीरियलाइजेशन। मैं उसको स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, कल करते उसको स्टार्ट। अभी अगर कुछ आपके डाउट है या फिर कुछ और कंसर्न है उसमें हम बात कर सकते हैं। पर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लिख देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सीरियलाइजेशन। किसी को पता है क्या होता है ये? नहीं पता तो हम इसको होमवर्क में डाल देते हैं, इसको पढ़ के आइए। इंटरव्यू क्वेश्चन लास्ट मोमेंट के लिए, ये नहीं कर रहा कि हाथ से पढ़ना शुरू कर दो, पर हाँ प्रैक्टिस में डाल लो, अगर सीरियसली जावा में काम करना है तो। ठीक है, क्लास करके और ट्रेनिंग करके इंटर्नशिप लेके कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। सो सीरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करते हैं, एंड उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं उसको भी करना चाह रहा, टाइम अपने पास लिमिटेड है। तो सिलेक्शन के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि व्हाट सिलेक्शन इज, बट उसको एग्जांपल वगैरह आप ट्राई करिएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ उसका मैं। सो सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्टेट इनटू स्ट्रीम्स, प्रोसेस फॉर process of converting the state of the java object into streams। ठीक है, तो आपका जो जावा ऑब्जेक्ट है, गाइस लिसन केयरफुली, द जावा ऑब्जेक्ट यू आर क्रिएटिंग समथिंग रेफरेंस इक्वल्स टू न्यू समथिंग, और समथिंग समझ नहीं आ रहा तो इसको ऐसे पकड़ लो। खैर ये तो लाइब्रेरी क्लास है। जब आप खुद का कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस कस्टम ऑब्जेक्ट, जैसे हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए थे इनिशियली जब हम बेसिक्स टॉपिक कर रहे थे, ये वाले हेलो, कैलकुलेटर, हेडफोन, इंस्टेंस ब्लॉक, वट एवर, एप्पल, तो ये क्लासेस हमने बनाई थी। तो आप क्या चाह रहे हो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रीम में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, नॉट दिस वन, दिस वन, एप्पल क्लास। इस क्लास के कुछ फीचर्स हैं, जैसे वर्जन, प्राइस,
मैं इसको ही पिक कर लेता हूँ, पर हम एग्जाम्पल दूसरा बनाएंगे कल। फॉर एग्जाम्पल दिस वे, कि आपके पास एक क्लास है एप्पल, ओके, ये ऑब्जेक्ट है। अब तो इसका जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, व्हेन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इट, we'll say this class has a feature, right? Not feature, it has features actually. This class has features like version and price, right? So when you create object of this class, that means we are also obtaining these things as well. So क्या करोगे, once we have object and want to retain that object state, then we can use serialization. ओके, तो आपने क्या करा, आपने लिखा एप्पल समथिंग एप्पल इक्वल्स न्यू एप्पल, और फिर लिखा एप्पल डॉट वर्जन equals to, it's a string, I don't know, maybe v10 whatever, and apple dot price, it's a int, let me take 1000 semicolon. So now we have a state of this object, version and price. Now idea is I want to send this object over to the network. हम जावा के ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको कहीं सेंड करना चाह रहे हैं मे बी। सो सिलेक्शन क्या है, दिस सिलेक्शन व्हाट इज, वो हमने देख लिया, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, डन। वाई वी नीड टू डू द सिलेक्शन, आज थ्योरी पढ़ लेते हैं, कल इसका एग्जांपल लिखेंगे। वाई वी नीड टू डू दैट, राइट, दैट मस्ट बी द क्वेश्चन। वाई टू, मैंने ऑलरेडी पॉइंट क्लियर कर दिया है, टू रिटेन दैट ऑब्जेक्ट स्टेट, ओके, टू रिटेन caps on the state, to send the same object over the network, means you are doing some kind of socket programming, और वहाँ पे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर आपको ऑब्जेक्ट भेजना है विदाउट कन्वर्टिंग और इट्स स्टेट, जो भी है जैसा है वैसे ही आप ऑब्जेक्ट नेटवर्क में सेंड करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस को। और टू सेव दैट ऑब्जेक्ट इनटू द डेटाबेस। वन मोर एग्जांपल, कि जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास बना है मे बी कहीं कहीं और सा रहा होगा, अब उस स्टेट को आप डेटाबेस में सेव करना चाह रहे हो, तो वहाँ भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। एक बार ऑब्जेक्ट का स्टेट आपने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को आप कहीं रख सकते हो। और ये कहाँ से होता है, ये स्टेट कहाँ से होती है, वेयर वी सेव दिस serialized ऑब्जेक्ट। जो हम पढ़ रहे हैं अभी इन फाइल सिस्टम, ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन, आंसर इसका है इन फाइल सिस्टम। सो कुछ XYZ फाइल बनेगी डॉट SER, ठीक है, लाइक दिस। सो आप फाइल का नाम रख सकते हो जो भी रखना चाहो, पर लास्ट में उसका एक्सटेंशन एज अ कन्वेंशन जो जावा का रूल कहता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एज अ नोट। what is the meaning of convention? I said as per convention. कुछ आइडिया? डिफाइन नेमिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ठीक है।
conventions or you can say rules regulations also work. So as per rules or convention, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में देता हूँ rules regulation. प्रोग्रामिंग में जावा में हम कहते हैं कन्वेंशन. सो एज पर कन्वेंशन we should always use .ser file extension to save the serialized Java object. फाइन. तो थ्योरेटिकल कुछ समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं हम, क्यों सीरियलाइजेशन करना चाह रहे हैं, कहाँ क्यों कैसे, इतना सा बस बता दो. थियरी पढ़ी हमने थोड़ी सी, थोड़ा सा आइडिया समझा कि सीरियलाइजेशन क्या होता है. हाँ या ना प्लीज़ बताइए कि व्हाट सीरियलाइजेशन विल डू. कैसे करना है वो नेक्स्ट क्लास में. हमने समझा कि सीरियलाइजेशन का एक्चुअली काम क्या है. थियोरेटिकल नहीं आया तो मतलब समझ में आ गया, मतलब कोई कुछ कह नहीं रहा तो. सो दैट्स गुड. सीरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम जावा ऑब्जेक्ट का स्टेट कन्वर्ट करते हैं स्ट्रीम्स में, और जब एक बार स्ट्रीम्स में आ गया तो फिर हम आराम से उसको नेटवर्क में सेव कर सकते हैं, डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, या फिर किसी और क्लास में फॉरवर्ड करना वो कर सकते हैं. एक तरह से वो डेटा को काइंड ऑफ इनक्रिप्ट कर देता है. और जब ये प्रोसेस हो रहा है तो हम उसको कहीं सेव भी करेंगे तो वो जाता है फाइल सिस्टम पे, SER एक्सटेंशन. सो कन्वेंशन तो कहता है कि आप .SER यूज़ करो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करो, बट टोटली यू कैन से कस्टमाइजेबल. अपना खुद का भी आप एक्सटेंशन बना सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन. So our IO package is almost done. As I said, this whole package contains more than 50 classes to perform the same operations, reading and writing. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. तो हमको बस तरीका समझना है. क्लास कोई सी भी हो उसके अंदर पक्का एक मेथड होगा जो रीड करता होगा, एक मेथड होगा जो राइट करता होगा. उसको समझ गए, या फिर आप इस अप्रोच को समझ गए कि हमने क्लास को इंस्टेंशिएट करना है, फिर उस इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट से हमको एक मेथड कॉल करना है, एंड दैट मेथड कुड बी राइट और दैट मेथड कुड बी रीड. अब वो क्या रिटर्न कर रहा है आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा. सो रीड अ सिंगल करेक्टर. और अगर राइट की बात करें तो राइट अ सिंगल करेक्टर. मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन निकाल लेता हूँ यहाँ से कि हमने रीड और राइट मेथड यूज़ किए हैं इस काम के लिए. दिस इज फॉर रीडिंग एंड दिस इज फॉर राइटिंग. डॉक्यूमेंटेशन सिंपल है पर तरीका थोड़ा समझना होगा तब समझ आ जाएगा, और इतना टफ बिल्कुल भी नहीं है. इनिशियली दिक्कत होती है समझने की एग्जैक्टली डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है. So we have used this in FileReader. We have used this in. Okay, so write method says writes a single character, कुछ रिटर्न करता नहीं है, खत्म बात, और एक एक्सेप्शन थ्रो करता है. So if an input output error occurs, so write method will throw IOException, और write method is overloaded. If I scroll down, so write int ले सकता है, कैरेक्टर का array int और इसके लेंथ वगैरह ले सकता है, write string के ऑफसेट और लेंथ ले सकता है. ऐसे तीन ही तो मल्टीपल ओवरलोड मेथड्स हैं, जैसा रिक्वायरमेंट है हम वैसा उनको पिक कर लेते हैं. सो अवर IO पैकेज इज ऑलमोस्ट डन. कल हम सीरियलाइजेशन टॉपिक करेंगे जिसकी ज़्यादा खास रिक्वायरमेंट नहीं है पर पता होना चाहिए क्या करता है. दैट विल टेक हार्डली 10 और 15 मिनट मैक्स, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना और फिर स्ट्रीम से वापस ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना वो सीखेंगे, बट टुमारो. एंड देन आफ्टर इफ टाइम परमिट्स एंड होपफुली इट विल हैपन, तो हम थोड़ा सा कलेक्शन टॉपिक जो है, कलेक्शन नो सॉरी नॉट कलेक्शन, JDBC API वो स्टार्ट करेंगे. सो मेक श्योर यू गाइज हैव दैट सॉफ्टवेयर वर्कबेंच. ये नहीं होगा तो काम बिगड़ जाएगा. सो मेक श्योर यू हैव दिस MySQL workbench. Since I am using Java 8 and 11 version for my previous classes, so I have used 8th version of this workbench. So if you are using this version, so that will also fine. This is the version 8.0115. So you can simply download it. Just simply say MySQL workbench 8.0. सबके पास है ये, किसी के पास नहीं है तो बताओ. Yes, sir. चलो ठीक है, ग्रेट. तो ठीक है, फिर हम कल सीखेंगे सीरियलाइजेशन प्रोसेस, एंड देन आफ्टर
डेटाबेस में कैसे ऑपरेशन करते हैं। तो टुडेज ठीक है, तो कल और परसों में अपना ये जीडीबीसी टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो फ्राइडे तक अपना बेसिक जावा के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स प्लस आईओ पैकेज प्लस जीडीबीसी 2 वीक में हमने इतना कवर कर लिया। सो दैट्स वेल एंड गुड। सैटरडे आप लोग आंसर करोगे, मैं पूछूंगा, दैट डिपेंड्स कैसे करते हैं वो देखते हैं। पर सैटरडे का काम इतना है कि हम लोग डिस्कस करेंगे और चीज़ों पे बात करेंगे और आप लोग प्रोग्राम्स दिखाओगे। तो आपके पास दिन है 2-3। शिवेंद्र, ये आपके लिए भी है। और जो भी आपका काम छूटा है जितना हो सके तेज़ी से कवर करिए, तो तब हम चीज़ें देखेंगे।